Good afternoon, all of you. So, we were doing freedom of speech and expression. It is audible. Shivam, just garam pani भेजो. So now let us start. Have you written the reasonable restrictions? नहीं लिखा? लिख लिया. Okay. So first is, let's start with issues related to freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. है तो? सेल कम तो नहीं? बी. First of all, write the significance of freedom of speech and expression. So, even if it is a GS question, you can always refer to JS Mill. Fine, on freedom of speech and expression, because if you see any articles in newspapers and all, they normally start any issue with freedom of speech and expression with the views of J.S. Mill. Fine. So what you can just write one quote of J.S. Mill. Right? The peculiar evil of, अब ये ऐसे भी आ सकता है कभी भी, freedom of speech and expression and threats to it in India. Fine. तो इसलिए you can utilize this. The peculiar evil of silencing freedom of speech and expression is robbing, R-O-B-B-I-N-G, robbing the human race, full stop. Basically, human race could have developed more and all these things. So you take all such opportunities when you control freedom of speech and expression. Fine. नीचे लिखो JS Mill and then on liberty. No need to remember the name, year and all, but very easy to remember, 2 years after revolt of 1857. JS Mill on liberty. Now you should always, whenever any question on on freedom of speech and expression, always tell from your side what is the importance of freedom of speech and expression. Fine. So 2 benefits, right? Yeah, you can write, there are 3 benefits. First, development of personality, individual's personality. Second, addressing social evils. And third thing is essential for democracy. Essential for democracy. Up next you can write, it is the first fundamental freedom. It is the first fundamental freedom given by the Constitution
first fundamental freedom given by the Constitution. Now, the conception freedom of speech and expression, this is of compound nature, means so many rights are part of freedom of speech and expression. It includes freedom to remain silent, it includes freedom to protest, it includes freedom to write or right to information. So it is of compound nature. There are multiple rights included into it. Fine? So you can write this, right? That's, it includes large number of rights. Like freedom of press, right to protest, right to artistic freedom, right to keep silent, right to information. Now, the scope of freedom of speech and expression in India. The scope of freedom of speech and expression in India. So first of all, write about approach in the Western world. Right, right, right. It is absolute in nature. Absolute in nature. There are no restrictions by the constitutions. Write in bracket, by constitutions. No restrictions by the constitutions of USA, France, on all these things. Fine. Now write situation in India. Right. Subjected to reasonable restrictions. How many total reasonable restrictions? 10, है ना? Right, subjected to reasonable restrictions, total 10. Fine. अब लिखो, what is the justification of restrictions? You can write that absolute freedom, absolute liberty turns into anarchy. अब लिखो, what is the situation in USA? Right, though constitutionally there are no restrictions, yet Supreme Court of USA has justified restrictions from time to time under, right inverted commas, implied powers. Implied powers मतलब बहुत सारे डॉक्ट्रीन्स हैं, तो डॉक्ट्रीन ऑफ इम्प्लाइड पावर है, तो इसका मतलब है इन इफेक्ट
Even in USA, there is no absolute freedom of speech and expression. Constitution में तो है. Fine. अब लिखो comparison with India. Huh? This one. If you look US Constitution, the way 10 restrictions are mentioned in our Constitution, no restriction is mentioned. Fine. But over a period of time, what has happened that, see, restriction, there is always like government concern is law and order, and people would like to assert liberty, but your assertion of liberty can go to the extent that it may not be in the interest of national security and all. So government of all countries have this implied power because it is their responsibility to maintain law and order. तो doctrines होती हैं judiciary की जिसके मतलब there are principles on basis of which judiciary gives judgments. तो US Supreme Court has applied the doctrine of implied power, even if not explicit power, yet legislature there has a implied power. Fine. And in effect, even in USA, there is no absolute right. Because in principle, absolute freedom will obviously result into anarchy, and you have to basically balance between the interest of an individual and the interest of the society. So there should always be a scope to put reasonable restrictions. Fine. So suppose in mains the question comes, or in essay or debate come, what is the status of it? So you can say that Indian Constitution, on the basis of experience of USA, instead of leaving things entirely on judiciary, the Constitution has already provided a specific grounds, and thus constitutionally there is a strong scope, a strong right of freedom of speech and expression. Are you understanding this? ठीक है. तो अब लिखो comparison with India. ठीक है. Right. Unlike USA, comma, where the protection of freedom of speech and expression and balancing the social interest is left entirely on judiciary, comma, Constitution itself mentions the grounds and the manner and nature of restriction. Manner and nature of restrictions. Grounds, manner and nature. So basically what is the system in USA on the basis of judicial pronouncements? This system is present in India in the Constitution itself. Fine. अब लिखो what type of restrictions can be imposed? What type of restrictions can be imposed? Can restriction on people's freedom of speech and expression be imposed only by executive? Just by executive order? No, this itself is a protection. Fine. If it is to be restricted, there has to be a law. Executive on its own cannot limit it. Second, it has to be restricted then only for the reasons mentioned. And even then,
judiciary will have a power to decide whether restriction is reasonable. Reasonability means whether the amount of restriction is not more than what is sufficient to serve the legitimate purpose. Fine. It means the principle which Supreme Court adopts in the interpretation is actually heavily tilted towards the protection rather than towards putting restrictions. Are you understanding this? Because freedom of speech, without freedom of speech and expression, democracy carries no meaning. In Western countries, the constitutions gives absolute freedom of speech and expression. Fine, but practically they also found difficulties in India, but there are a lot of safeguards. It is not very easy constitutionally for government. Government would always prefer to restrict the freedom of speech and expression, but very strong constitutional safeguards in the Indian constitution. Have you understood this? So what are these safeguards? You can just write, क्या लिखा था पहले? Institutions or safeguards. So first, only legislature can impose restrictions. Now tell me, can state legislature also or only union parliament? हाँ? क्यों? स्टेट आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स थे. अब फंडामेंटल राइट्स में स्टेट था. स्टेट के डेफिनेशन से दे हैव एक्सक्लूडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स. देन फाइन. सो ओनली लेजिस्लेचर कैन इम्पोज मीन्स राइट both union and state. Wherever state government is written, you have, because there are only 2-3 places where they have excluded state legislature. Otherwise, everywhere state union is same. So union can also impose and state legislature also can impose. Both can impose restrictions. Next. No restriction by just executive order. So now this restriction, if government applies, it has to apply in accordance to the procedure established by law. Yes or no? Yes. In accordance to the procedure established by law. अगर law कहता है, suppose IT Act कहता है ये restriction है, तभी executive कर सकती है. और whenever this doctrine comes, procedure established by law, we are always talking in terms of scope of the powers of executive. Is it clear? Ordinance और law एक ही चीज है. ठीक है. ऑर्डिनेंस इज ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट. आ सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. राइट. एनीवे ये लिखा है इट कैन नॉट बी डन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. राइट. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैज टू बी इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर established by law. So suppose section 66 says you send such type of messages and all. Fine. So procedure which if law is there then only you can do. Fine. अब next लिखो. Article 19 includes the principle of due process of law. Due process of law. ठीक है. अब लिखो why. Right.
it will restrict the arbitrary power of legislature. It will restrict the arbitrary power of legislature. It means legislature can make only such law which is fair, just and reasonable. Just and reasonable. मतलब law को judiciary can declare that law is not valid. Fine. अब लिखो right. Next लिखो right. Judiciary can declare a particular law or a part of it as void if the restriction is not reasonable. Right? One of the criteria is that the restriction should not be more than what is enough, more than what is enough for the purpose. What is enough? अब देखो, what is the overall approach of judiciary? What is the overall approach of judiciary? Right? There is greater tilt towards protection of freedom of speech and expression. Greater tilt towards protection of freedom of speech and expression. Anyway, judiciary is protector of the fundamental rights. Fine. Now let us understand the restrictions, the meanings of restrictions and the debates linked with these restrictions. Fine. So now you write, write Article 19 Clause 2 provides for the restrictions on freedom of speech and expression. Now the first restriction is, right, sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity of India. Right, it was not present in the original constitution. But added by Sixteenth Amendment Act in 1963. Fine. Now next you write security of the state. Security of the state. Now the question is, what do you understand by this term security of the state? How
how judiciary decide that this particular restriction is made in the interest of the security of the state. What do you mean by security of the state? Huh? Huh? Public order, decency, morality, but that is mentioned separately also. Huh? Yes. So you can write, right? तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए भी बहुत सीरियस इशू होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कैन से एनीथिंग दैट इट थ्रेटन्स द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. फाइन. तो राइट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, right, the situations like armed rebellion, insurrection, comma, right, it's very serious, लिखो, right, very serious threat to public order. ठीक है. So it has to be something very, very serious, insurrection, mutiny, these type of things. लिखो, right, it should not be a simple law and order situation. It should not be a simple law and order situation. Fine. Now you write one question, right? Right, in the light of Article 19 Clause 2, examine the constitutional validity of the laws, constitutional validity of section 124 capital A, section 124 capital A of IPC 1860. Right? Right. What changes you suggest? In the above section, comma, to achieve the balance between fundamental rights and the issue of security of the state. So section 124 capital A deals with sedition. ठीक है. अब पहले तो लिखो, right, what is section 124A? Right, it deals with sedition. Sedition. ठीक है. अब next लिखो, right, right, it has been accused that sedition laws have been misused. By the governments and cannot be treated as a
reasonable restriction. Does Constitution mention sedition as a ground? No. ठीक है, अब पहले तो लिखो. First point you write, Constitution does not mention sedition as a ground of reasonable restriction. मतलब basically sedition itself is not a ground of reasonable restriction. Now the second thing is you write even in IPC sedition was not included in the original law. Original law which came into existence in 1860. जो ओरिजिनल आईपीसी में से भी सेडिशन हटाया गया था. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो राइट. सेक्शन 124 A was added in 1970. Sedition law was added in 1870. Was added in 1870. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो राइट. It was added to protect the interest of colonial government. But India में any freedom of speech is easily restrained in the name of sedition, and people even don't understand what exactly is the sedition. So if you see Article 124 capital A, the sedition is defined as something said against the government. Government is not nation, government is not a state. So it basically benefits the ruling party or whosoever is in government. You use the sedition charge and you kill all sort of dissent. Fine. So democracy में तो there has to be huge toleration for the dissent, and when you curb the dissent, when you curb the opposition in the name of sedition, so there has been a big question mark on the constitutional validity of continuation of Article 124A. And in countries like USA, sedition is no offense. It is not considered as a ground for reasonable restriction. Fine. Now, sedition in USA, even if you burn the national flag, it is not called as sedition. Fine. Because we should never give scope for the government to weaken the rights and strengthen its authority. Fine. But what is the mockery of democracy here? That Article 24 is not even mentioning incitement of any offense against the nation. It is only suggesting incitement of any offense against the government. So it is protecting the government. That is why the constitutional validity is questioned. Unfortunately, judiciary has not declared Article 124 Section A as null and void, though it is null and void. Rather, judiciary has issued lot of guidelines that whenever sedition laws are done, what will be treated as a sedition and not. But actually, they should be eliminating this idea of the concept of sedition, or it should be
either against the nation. It should not be that criticizing the government becomes sedition. Then the purpose of democracy, freedom of speech and expression is essential for democracy. And government can change or government can project any criticism as sedition. So at least government allows, it prohibits people's ability to speak. Have you understood this? Fine. So it was introduced by colonial authorities. ठीक है. अब लिखो, what is the biggest problem? What is the biggest problem? Right. As per Article 124A, Section 124A, sedition is described as making attempts for hatred, contempt, or disaffection towards the government, either through written, spoken, or visible representation. तो ऑथर्स लाइक अरुंधति रॉय या मतलब कोई भी ऑपोजिशन में सेडिशन चार्ज लगा सकते हो. अब लिखो, राइट, व्हाट इज द पेनल्टी? व्हाट इज द पेनल्टी? मिनिमम imprisonment of 3 years. Minimum imprisonment of 3 years, which can go up to life imprisonment. Which can go up to life imprisonment. This doesn't appear rational at all in terms of punishment also. Fine. अब लिखो, right, hence gives a scope for government to check the dissent. Give scope to the government to check the dissent. DISSENT, dissent. अब just लिखो history of sedition. Yeah, history का ऐसे सब मतलब you can just write. You can write, it is to be noted that sedition laws have been applied against leaders like Tilak. Full stop, right? Tilak explained the difference between राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र RASHTRA, राष्ट्रद्रोह DROHA, राष्ट्रद्रोह and राजद्रोह. Next, sedition laws have also been applied against Gandhi. Was Gandhi anti-national? Was also applied against Gandhi. So this itself shows the arbitrariness of the sedition. Fine. अब लिखो, what has been the approach of judiciary? Right. Though judiciary has not declared
section 124A as null and void, yet it has issued the guidelines for the courts to determine sedition. Courts to determine sedition. So sedition is a crime under IPC and it has defined. Now in relation to sedition, the most important case you can write, अब ये सब प्रीलिम्स में आ सकते हैं केसेस, फाइन. तो राइट द केस केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. राइट राइट सेडिशन charges can be applied only when these actions or speech result into right inverted commas incitement to offense. अंडरलाइन करो incitement to offense. If it incites to offense, ठीक है, लेकिन बाद में एक और केस आ गया, उसमें हो गया कि until unless somebody does not commit the offense, then also it is not in sedition. Means 10 people coming together and raising, let's say, anti-India slogan, and others are not affected by it, then there is no point. So then it is not just an incitement to offense. It is like commitment to offense. So judiciary is trying to give a huge coverage to the freedom of speech and expression from the anti-sedition laws. Fine. Incitement to offense. And second, right, there is one more condition. There is another condition. Another condition. हाँ, केस मतलब सेडिशन कब पनिशमेंट कब करोगे? तो एक तो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड देयर इज अनदर कंडीशन व्हेन द इंटेंशन इज टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर एंड डिस्टर्ब पब्लिक पीस. Now write another case, Balwant Singh and others. Balwant Singh and others versus State of Punjab. Just a minute. Balwant Singh and others versus State of Punjab. Yeah. मतलब किसी को प्रोवोक करना कि वो जाके कुछ करे, ठीक है, राइट. इसमें राइट, तो बेसिकली दे वेयर रेजिंग एंटी इंडिया स्लोगन एंड दे वेयर रेजिंग द स्लोगन्स फॉर खालिस्तान एंड ऑल. फाइन. तो लिखो राइट, मेयरली रेजिंग एंटी इंडिया स्लोगन्स, मेयरली रेजिंग एंटी इंडिया स्लोगन्स like Khalistan Zindabad, Hindustan Murdabad, will not result into sedition. Until and unless
it actually results into somebody committing the offense. Committing the offense. So people may keep on saying so many things. You have to ignore it. Fine, it's useless. ठीक है? Yes. So this is the basic thing, that sedition, security of state, etc., until unless something concrete, something very huge and significant does not happen. Fine. This is how court tries to protect the freedom of speech and expression. Fine. So now let us see other restrictions. Other restrictions is friendly relations with foreign states. Friendly relations with foreign states. Friendly relations with foreign states. So this is very clear, like somebody making some speech, talking in some way that can impact the friendly relations with the foreign state. His speech, his writing, his letter can be restricted. Fine. So you can write this. Right. Government can restrict the freedom in above situation. Above situation. Fine. However, the restriction does not apply in context of Commonwealth countries. So you are free to criticize Pakistan policy and all. ठीक है. Commonwealth countries. तो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लिखना है या कुछ भी है तो कर सकते हो. ठीक है. खैर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. Now next is public order. Public order. अब लिखो what is, you know what is public order? Yeah, just write public order should not be equated with the ordinary law and order situation. ठीक है. Any law and order problem, then you cannot. Have you understood this? Up next लिखो, right, public order will impact, या public order as a concept will apply only when the action or speech can seriously harm the public life. Right, in public life का मतलब क्या हुआ? Right in bracket, way of life. That is the relations among different communities. If it aims to disturb the public order, way of life, hatred, enmity against the communities, जिससे जो इंडिया की एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, डिफरेंट कम्युनिटीज आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, उस पर some effect happens, then it will be a public order. But otherwise there has to be like
court should be able to distinguish between law and order, and public order is a more serious concept. ठीक है, अब next लिखो, right, public order includes public safety. Public order includes public safety. ठीक है, तो now just write that government, yeah, right, judiciary has defined 3 concentric circles. Three concentric circles. Fine. So now the most crucial and critical reason to restrict the freedom of speech and expression is security of state. If India's security is under threat by insurrection, by any other external, this is where there can be a maximum restriction or favor. Fine. Now the second in the order of priority comes public order, and the third in the order of priority comes law and order. Fine. So police has to prove that how it is impacting the security of a state. For example, in Shreya Singhal case, fine. So the 2 individuals sharing their views on Facebook, writing some opinions on a leader. So it was not enough basis that the police take action of taking these persons in custody. Fine. So you have to prove that how seriously this comment would actually result into destruction of the peace and order or law and order or public order. Fine. If police says law and order procession is going, law and order problem, that's not a problem. Fine. So there has to be something said which impacts the way community lives in India, then you can take the consideration. Fine. Now these 3 circles, you have to understand in context of the issue of hate speech. Fine. Because public order, now hate speech can disturb the public order. But the basic problem is how to decide that this speech is a hate speech. The government can make any genuine criticism of the government as a hate speech again. So hate speech laws, hate speech has to be very precisely defined, and hate speech, or basically again speech, has to be protected rather than giving preference over the order. Have you understood this concept? So right now there is a lot of discussions going on the hate speech laws in India. Now the basic problem is hate speech is a crime under IPC. Hate speech is also a part of or it is electoral malpractice. It is corrupt practices in elections subjected to punishment. But hate speech has not been defined in India so far. So there is one case, Pravasi Bhalai Sangathan case. In Pravasi Bhalai Sangathan case, Supreme Court had directed the Law Commission to define the hate speech. The purpose is that the arbitrariness can be minimized. So Law Commission has now come up with its recommendations. Up till now that changes have not been done. But Law Commission का recommendation क्या है? तो basically hate speech, if somebody, जिस तरीके से sedition को interpret किया है, in the similar way they are interpreting that a speech will be treated as a hate speech
only when it actually results into somebody going and committing the offense. Fine. Otherwise, it will not be so easy that any opposition is or party, you can simply say this is a hate speech and this has to be restricted. Have you understood this? So basically, speech has to be protected, and how you can give maximum protection in this context, Law Commission has given its recommendation. You have understood this? So in the name of hate speech, government can restrict. इसके अलावा there is also one committee. Which committee is that? Vishwanathan Committee. Fine. Now Vishwanathan Committee has been set up by government for what purpose? Online hate speech. Fine. Why this committee was needed? Because in Shreya Singhal case, Supreme Court has declared section 66A as null and void. What was section 66A? Using the medium of any electronic medium, if you sent the derogatory messages causing inconvenience to the other person. Fine. What was the problem in section 66A? Problem क्या था? हाँ? नहीं, बेसिक एक्ट में क्या प्रॉब्लम था? एक्ट में प्रॉब्लम था कि लॉ जो है, लॉ शुड नॉट बी वेग. ठीक है, हमने क्या कर दिया? डेरोगेटरी मैसेज. अब एनीबडी कैन फाइंड एनीथिंग डेरोगेटरी. ठीक है, तो जब लॉ को ऐसे वेगली वर्ड किया जाता है तो उसका बेसिक इंटेंशन होता है मिसयूज बाय द गवर्नमेंट. फिर मेक क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस टू अ पर्सन. अब इनकन्वीनियंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो फिर ये हो गया, चूंकि सोशल मीडिया बिकेम अ मेजर इंस्ट्रूमेंट जिसमें पार्टीज या यू. अब सोशल मीडिया में मैक्सिमम एक्सचेंजेस ऑफ मैसेजेस क्या हैं? पॉलिटिकल है. कोई लोग इनके भक्त हैं, कोई उनके भक्त हैं, दे आर जस्ट डिस्कसिंग. ठीक है, तो फिर वही है, रूलिंग पार्टी विल गेट अपॉर्चुनिटी टू कर्ब द डिसेंट. फाइन. तो सेक्शन 66A, after it was declared null and void, since then government is trying to reintroduce the restriction on freedom of speech by in the name of hate speech, etc. Fine. So that is why Vishwanathan Committee and Vishwanathan Committee made similar suggestions which Law Commission has made. Only Vishwanathan Committee के जो section है उसमें they are just adding कि in online speech. Finally, as of now, no such law has been made. Have you understood hate speech issue? Ab hate speech, why hate speech should be a crime? How do you define hate speech? Hate speech, how do we define? Hate speech का basic purpose क्या है? Making hate speech as an offense. उसका basic purpose क्या है? हाँ, तो basically to check any sort of ill feelings among the communities. तो hate speech laws उन countries में चाहिए होते हैं which are heterogeneous societies. Fine. So these laws are used to create hatred, disturb the public order. Fine. And especially these hate speech laws are needed for whom? They are needed for the vulnerable sections, mostly for the minorities. India में hate speech laws IPC में है. फिर कुछ certain laws हैं, certain laws like prevention of atrocities against scheduled caste and scheduled tribe. तो उसमें भी वो concept आता है. तो main चीज़ है why hate speech laws they become a necessary evil
in a countries where there is a heterogeneity to maintain peace and order and to protect the vulnerable section. Purpose है protection of vulnerable section and maintenance of public order. This is the purpose. तो इंडिया में हेट स्पीच लॉज अगर रहेंगे तो दैट इज नीडेड. एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्राइम इज डिफाइंड हेट स्पीच, बट हेट स्पीच डिफाइन नहीं किया. अगर हम किसी चीज को डिफाइन ही नहीं करते तो बेसिक पर्पस क्या हो जाता है? एक बहुत बड़ा स्कोप है फॉर द गवर्नमेंट. तो नीड क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए देयर इज अ नीड टू डिफाइन हेट स्पीच, नीड टू डिफाइन हेट स्पीच. बट हेट स्पीच कैसे डिफाइन की जाए? इट शुड बी डिफाइंड इन अ वे दैट मैक्सिमम प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फाइन. तो इसीलिए लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन यू कैन रेफर कि until unless real incitement to offense does not happen, that speech should not be considered as a hate speech. अगर कुछ समय बाद उस स्पीच का इफेक्ट पड़े तो नहीं, आइडियोलॉजी बिल्ड करने में टाइम लगता है. लॉ में फिर अब बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें डिले प्रिंसिपल है, टाइम प्रिंसिपल है. अब ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल हैं. दिस इज ऑल कोर्ट डिसाइड व्हेन द थिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट क्या डिसाइन लेती है, कब है, तो दे टेक द कॉम्प्रिहेंस, दे हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स कि पूरा दे विल सी द कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटेंशन. तो इट इज ऑल वेरी वेग एंड देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द लॉ. तो राइट नाउ जस्ट लिंक्ड abetment to suicide under hate speech. Hate speech is a hatred towards certain groups. अगर किसी ने क्राइम अबेटमेंट सुसाइड है तो वो खुद ही अपने आप में एक सेक्शन है. उसके लिए इस सेक्शन की क्या जरूरत है? ठीक है, उसकी स्पीच उसने बोली तो उस पर वो वाला सेक्शन लगेगा. अबेटमेंट टू क्राइम है तो अबेटमेंट टू सुसाइड है तो उसके लिए अलग सेक्शन है. उसको लिंक थोड़ी करने की जरूरत है. फाइन. अब नेक्स्ट लाउड, यू हैव अंडरस्टूड दिस? फाइन. सो नाउ ब्लास माइनॉरिटी के अगेंस्ट थोड़ी होता है. ब्लास्फेमी तो खुद ही लगाते हैं ना अगेंस्ट देयर ओन सोसाइटी. तो जैसे सपोज मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स ने कोई ऐसा एडवांस कुछ व्यू ले लिया तो ब्लास्फेमी और वो सब लगता है. हेट स्पीच का मतलब हुआ टू कम्युनिटीज में हेट्रेट फैलाना और उस हेट्रेट का रियल इफेक्ट होना चाहिए. रियल इफेक्ट क्या होना चाहिए? या तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इफेक्ट हो जाए और बेसिक चीज है पब्लिक ऑर्डर इशू है. वो पब्लिक ऑर्डर क्या होता है कि जब दो कम्युनिटी साथ में रह रही हैं और उनका संबंध बिगड़ जाए. केवल लॉ एंड ऑर्डर तो एक क्रिमिनल है, किसी ने चोरी कर ली, ये सब वो लॉ ऑर्डर सिचुएशन है. ठीक है, तो उस लेवल तक इफेक्ट हुआ हो तब जा करके पनिशेबल. किस कॉन्टेक्स्ट में? वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या उस टाइप से उसमें आएगा. नॉट हियर, इट इज नॉट रिलेटेड टू हेट. क्रिएटिंग हेट्रेड अलग है, वो सेक्युलरिज्म वाले इश्यूज हैं. यस. National Security Act, if it says person cannot utter any voice and all, ऐसा कुछ कहता है. National Security Act तो एक तरीके का preventive detention law है. ठीक है, it is a preventive detention law. Hate speech means you spoken any word. हाँ, उसी लिए वो
It can be any form of representation. Any form. स्पीच के लिए बोलना जरूरी नहीं. हाँ, चलो आप लिखो. राइट, क्या हम लोग कौन सा डिस्कशन करें? पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर है ना. लेकिन किस रेस्ट्रिक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं? पब्लिक ऑर्डर ना. पब्लिक ऑर्डर. अब यहाँ पे लिखो. राइट, द इशू ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया. लिखो. राइट, इशू ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया. इशू ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया. अब लिखो. what is the basis of laws making hate speech a crime? Laws making hate speech as a crime. Right? In countries with heterogeneous societies, hate speech laws aim at protecting point number 1, the vulnerable section. Point number 2, public order. Right, even UN Declaration of Human Rights, even United Nations Declaration of Human Rights, an International Convention on Civil and Political Rights prohibit the hate speech. अब लिखो. राइट, what is the situation in Indian laws? Right, is hate speech is an offense. Offense under IPC. Write in bracket section 153 capital A. 153 capital A. 153 capital A. Dash करके लिखो. राइट, it penalizes for promoting hatred, enmity among the groups on the basis of, on the grounds of race, religion, language, etc. Next, right, section 295 capital A. Right, right. It is a punishable offense. 295 capital A of IPC. It is a punishable offense if there is any speech or action with the intention
to insult a religion. Next लिखो right. Hate speech, next paragraph, hate speech is considered as corrupt practices. Under Representation of People Act 1951. ठीक है, right, section 123 clause 3 of RPA restricts appeal on the ground of religion, race, caste, community, language in elections. यहाँ पर जस्ट एज अ नोट यू राइट, नोट करके लिखो, तो इंडिया में रिलीजन, रेस इस सब का यूज नहीं कर सकते इलेक्शंस में, ठीक है. एज अ नोट यू राइट, दिस इज not directly related to hate speech issue, but this is a very famous case, Prabhu versus Kunte case. Prabhu versus Kunte case. What is the other name of this case? What is the famous name of this case? Prabhu versus Kunte case, right? Hindutva case. ठीक है, अब इसमें लिखो राइट, सुप्रीम कोर्ट held that appeals on the ground of Hinduism will not be subjected to corrupt practices. तो हिंदुत्व के नाम पे यू कैन टेक वोट, ठीक है, वो हिंदू इसमें नहीं आता इसके डेफिनेशन में. लिखो राइट वाई, हिंदू लिखो राइट वाई, राइट, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन. हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. क्या हो गया? Hinduism is not a religion, but it is a way of life. अब लिखो why it is not a religion? Why Hinduism is not a religion? ठीक है, why Hinduism is not a religion, right? There is no single church. Right, there is no single religious book. Next, we cannot point the originator. Cannot point who is the originator, prophet या ऐसा कुछ नहीं. तो हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है. फाइन, तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखना है, हिंदुत्व जजमेंट, प्रभु वर्सेस कुंते केस. फाइन, तो सेक्शन 124A ऑफ आरपीए और हेट स्पीच का सबसे बड़ा लिंक ही है इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है. नेक्स्ट है सेक्शन 123 कैपिटल A. 123 कैपिटल A
of Representation of People Act 1951, right? Promoting acts which leads to enmity or hatred. Promoting acts which lead to enmity or hatred among different sections will be treated as a corrupt practice. ठीक है, अब लिखो what is the controversy about hate speech in India? What is the controversy about hate speech in India? Right? The misuse of laws in context of elections. Right? Those speech are allowed which promote hatred. तो अब ये तो पुलिस की मनमर्जी है किसको पकड़ना है. तो पुलिस स्टेट वर्सेस डेमोक्रेसी. ठीक है, तो पुलिस स्टेट, लेवियाथन स्टेट, फाइन. तो पुलिस के पास ज्यादा पावर है या सिविल सोसाइटी, दिस इज टू बी डिसाइडेड. तो देयर इज अ मिसयूज, खुलकर हेट स्पीचेस यूज होती है और पकड़ के एक ही लोगों को ले जाते हैं. ठीक है, तो देयर इज अ मिसयूज ऑफ हेट स्पीच लॉस. एंड नेक्स्ट यू कैन राइट हेट स्पीच. अब लिखो राइट हेट स्पीच has also been used against the immigrants. Next, hate speech have resulted into crimes like lynching. Culminated into crimes like lynching. Lynching and all these things. Right approach of Supreme Court. Hate speech, why do you need hate speech? Why do you need to go for speaking in this way? This is like mobilization of your voters. It is allowed in election. Allowed नहीं है, लेकिन hate speech कौन सी है? यहाँ तक कि जुडिशरी भी कह रही है हिंदू धर्म के ऊपर अगर वोट मांगते हो तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो हेट स्पीच का इशू क्या चल रहा है? हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए. तो लॉ कमीशन ने डिफाइन किया. डिफाइन करने का मतलब वही है कि हेट स्पीच शुड लीड टू समबडी कमिटिंग एन ऑफेंस. ऐसे नहीं जस्ट स्पीच प्रमोटिंग एनिमिटी. अब ये फिर वेग है, लॉ शुड नॉट बी वेग. ठीक है, तो दिस इज द, अभी ये सब चूंकि करंट में है, विश्वनाथन कमेटी दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. तो व्हाट इज द इशू? अप्रोच ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसमें राइट सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड certain guidelines for the courts. Guidelines for the courts, for example, पहला लिखो राइट there is a need to make difference between discussion
advocacy and incitement. Discussion, advocacy and incitement. फाइन. तो स्पीच तो बोल दिया, मान लो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे इनके खिलाफ या कुछ बोल रहे, डिस्कशन चल रहा है, कोई जाके बोल दे हेट स्पीच, मैम को पकड़ ले जाओ ठीक है, तो ऐसे नहीं. या हम अपने व्यूज एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर इंटेंशन है कि somebody should go and commit the crime, then it will be treated as a crime. So try to make a difference. Was it just a discussion or advocacy? Even advocacy is fine, no problem. Problem is incitement to offense threatening the security and public order. Fine? Go right. कहाँ पहुँचा? Between these three things. Okay, right? Right. Similarly, right, it is to be seen whether security of the state, comma, public order is threatened, or is it just a law and order problem, or is it just a law and order problem. तो अब कोई भी केस होता है, चाहे पद्मावत केस हो, कोई भी केस हो, ठीक है, सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, एमएफ हुसैन केस हो, कोई भी केस हो, या इंसाइट किया जा रहा है, उसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ठीक है. और लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यू कैनॉट कर्ब समबडीज फ्रीडम. कुछ समथिंग ग्रेव हैपनिंग, public order is affected, security is affected, this will be the ground. ठीक है, तो जो भी freedom of speech and expression के issues हैं, सब in all such issues judiciary utilize same parameters. Have you understood this? Okay. अब next लिखो प्रवासी भलाई क्या? Freedom वो तो creative freedom में कह सकते हो. आर्टिस्टिक फ्रीडम, ये सब मतलब अल्टीमेटली आर दे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और नॉट. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखो, राइट दिस केस, राइट सुप्रीम कोर्ट इन प्रवासी भलाई संगठन, प्रवासी भलाई संगठन, मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में मारा पिटा होगा बिहारियों को, ठीक है. प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. राइट, आस्क्ड लॉ कमीशन टू डिफाइन, आस्क्ड लॉ कमीशन टू डिफाइन द हेट स्पीच and suggest measures to curb the problem of hate speech in India, to curb the problem of hate speech in India. अब लिखो, राइट response of law commission. Right, law commission has not come up with any speech, has not come up with any definition, but it has
made recommendations right right hate speech should be leading, yeah, hate speech is a speech which should result into the incitement to offense. Incitement to offense. Right? Until then, there should not be any penal action. Penalizing actions. Right? It has given following suggestions to deal with the problem. It has even given suggestions to deal with the problem. First, formulate such laws which protect vulnerable sections. Next, it has advised that while determining hate speech, following tests should be taken. Yeah, following tests should be considered. पर्पस क्या है कि इजीली किसी स्पीच को हेट स्पीच में कन्वर्ट नहीं किया जाए. ठीक है, टेस्ट में होगा कंटेक्स्ट ऑफ द स्पीच. In what context it is being discussed? Context of the speech. स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, ऑडियंस कौन है, कहाँ पे बोली जा रही है, सारे फैक्टर्स को लेना है. ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ द स्पीच. नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ द ऑडियंस. Status means are they vulnerable to such type of statements or not? उनका कितना दिमाग है. ठीक है. Next, status of the maker of the speech. Maker of the speech. ठीक है. Next, the potential of the speech to create disruption, or incitement to offense. Incitement to offense. Right, next paragraph. Instead of relying on the law, effort should be made to sensitize people. Sensitize people and educate them. On the responsible exercise of freedom of speech and expression. Right, it has suggested to include new sections
new sections. Section 153 capital B, and section 505 capital A in IPC. वही है incitement to offense. ठीक है. अब next लिखो the case of online hate speech. The case of online hate speech. Online hate speech. इसी के आगे लिखो विश्वनाथन कमेटी रिकमेंडेशन. टीके विश्वनाथन कमेटी रिकमेंडेशंस. टीके विश्वनाथन. टी फॉर क्या होता है? ट्री. टी फॉर टाइटलर. टाइटलर को नहीं पकड़ा ना है ना. ठीक है. सो विश्वनाथ. अब इस कमेटी को रिकमेंड, दिस कमेटी has been criticized. The recommendations of the committee has been criticized. Why criticized? Because it suggests to bring stricter laws to check the hate speech. Fine. So it will become an opportunity for government to bring section 66A again. In this context it is criticized. ठीक है. Online hate speech. अब इसका लिखो background. What is the background? Right. In Shreya Singhal case 2015, Supreme Court had struck down Supreme Court had struck down section 66 capital A of IT Act 2000, Information Technology Act 2000. अब लिखो why. Right. According to the Supreme Court, it had, right inverted commas, chilling effect. Chilling effect on freedom of speech and expression. समझो रेफ्रिजरेटर में रख दिया, लोग बोल ही नहीं पाएंगे. ठीक है. अब लिखो why. Vaguely worded. It was vaguely worded. Vaguely worded. Fine. लिखो right. It was right. Right. It was penalizing people for any type of communication on online media which other person finds derogatory, cause annoyance or discomfort. Annoyance, discomfort, कोई इंसान परेशान हो जाए. ठीक है. तो ये बेसिकली पॉलिटिकली था. जैसे राहुल गांधी का काफ़ी मजाक बनाया जाता था. ठीक है. तो वो सब कर्व करने के लिए ये बना दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो राइट. आप लिखो राइट. व्हाट इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट? व्हाट इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट?
what is the present context to bring the new law right, the incidents of lynching and mob violence, incidents of lynching or mob violence using online mediums, ऑनलाइन मीडियम्स. ठीक है, अपना जैसे जियो है, अब गवर्नमेंट ने खुद ही सबके हाथ में जियो पकड़ा दिया, जियो जियो. ठीक है, और अब एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि चूंकि गवर्नमेंट को ये लॉ लाना है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट खुद ही करा सकती है इस तरीके के हेट्रेड स्पीच जिससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, एंड इट बिकम्स basis for government to come up with restrictions on freedom of speech and expression. ठीक है, and solution like lynching and all, this is again law and order issue. It's a failure of the government. It does not mean you come and take away people's freedom of speech and expression. तो main है कि our sensitivity should not be towards the government. And we should not allow government to misuse national interest and security, etc., to curb the freedom of speech and expression of the people through other gate. Have you understood this? So, right. Vishwanathan Committee has recommended the insertion of new section section 153C to prohibit incitement of hatred through online speech as well as addition of section 505 capital A, section 505 capital A, to prevent provocation of violence on the ground of identity. Provocation of violence on the ground of identity. ठीक है, अब लिखो राइट रिस्पॉन्स ऑफ द सिविल सोसाइटी. रिस्पॉन्स आइडेंटिटी, किसी का रिलीजन, कास्ट, लिखो राइट रिस्पॉन्स ऑफ द सिविल सोसाइटी. Right, it is seen as a step of government to bring section 66A through another gate. To bring section 66A through another gate. ठीक है, अब next लिखो right. However, next लिखो right. Committee has made some other recommendations also. Which include appointment of cyber crime coordinators,
in all states and anti-cyber crime cells at the district level. Anti-cyber crime cells at a district level. Mean ये सब just keep track of hate issues. Now next restriction is decency. देखो right, decency or morality. Next restriction on freedom of speech is decency or morality. Decency or morality. ठीक है, अब लिखो right, how courts in India determine the decency and morality. How courts in India determine decency and morality. अब लिखो what is the controversy या why it is controversial. Right, decency and morality have been used as a grounds to curb artistic freedom. To curb artistic freedom. ठीक है, right? One of the worst example of the misuse is against the celebrated artist and painter M.F. Hussain. ठीक है, तो it is also unfortunate that the courts took such a long time in protecting his artistic freedom and dignity or his human dignity or freedom of speech and expression, or basically decency and morality has been misused. Actually government main hai, there are some sections of the society who may not be even knowing about the modern art and all these type of things and go for politicization, vandalization, and instead of punishing such persons, the government go for restricting the freedom and speech of expression of the authors, the writers and filmmakers and all these things. So artistic freedom is in the big crisis. And another thing is decency and morality. How will you define decency and morality? Fine. So decency and morality is like how society is looking at those. But in case of India, because there is so much diversity, and which decency and morality, some people, some sections have become the moral policeman on their own, self-appointed. And they may not be knowing the real social values, norms, India's history, India's culture, etc. Fine. Nor they may be knowing about the art. You have to see that M.F. Hussein's objective was really to hurt somebody's feelings. And how will you decide? The people will be of different category. Some may get hurt for no reason. ठीक है, तो what will be a parameter? कि कोई छोटे से भी काम से hurt हो सकता है. Somebody can be over emotional. ठीक है,
तो कैसे हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड, एंड शुड इट नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट रादर टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट दोज हु आर सो एक्स्ट्रा सेंसिटिव? एक्स्ट्रा सेंसिटिव को लोगे या नॉर्मल सेंसिटिव को लोगे? किस बेसिस पर तुम डिसेंसी, और इंडिया में क्या चीज डिसेंट है क्या चीज इनडिसेंट है, डिसाइड किस बेसिस पे करोगे? जजेस डिसाइड करेंगे, या फिर सब कम्युनिटी के कुछ कुछ लोगों को बुला करके एक यू कैन मेक अ कमेटी, कि ये कमेटी फिर बताएगी कि ये ड्रेस पहनना है या ये ऐसे, ठीक है? देन व्हाट विल बी डेमोक्रेसी? ठीक है। प्लस इंडियन कल्चर में ऐसा कुछ मोरालिटी या द टाइप ऑफ मोरालिटी विच हिंदुत्व ब्रिगेड डिस्क्राइब्स, दैट टाइप ऑफ मोरालिटी वाज नॉट देयर इन हिंदू कल्चर ऑल्सो. Fine. So artistic representation, we have a tradition of Khajuraho and all. So those people who claim themselves to be the protector of Indian culture, do they know Indian culture? अब दूसरी बात है कि governments and judiciary also on number of occasions failed to protect. ये main concern है on artistic freedom. तो डिसेंसी एंड मोरालिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? उसके लिए देयर हैव बीन 2 टेस्ट्स. पहला टेस्ट, और ये दोनों एक टेस्ट है जो ब्रिटेन से लिया हुआ है, हिचनर्स टेस्ट, एंड दूसरा टेस्ट जो अभी यूज करते हैं वो मिलर्स टेस्ट. ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, सो देयर इज नीड टू कम अप विथ मोर क्लैरिटी. समझ में आया इसका कंसेप्ट? क्या डिसेंसी मोरालिटी इंडिया, मतलब वही है ना, लोगों की सेंसिटिविटी को देखते हुए. अब डिसेंसी मोरालिटी में जैसे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो तो एक ऑफिस तुम्हें बनाना पड़ेगा, या पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफिक मूवीज हैं विच इम्पैक्ट द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स, विच कैन हैव effect on increasing the some sort of crimes. So a clause has been there in context of decency issue, but decency किसको कहोगे? There is a difference between an artistic expression and a pornography. You have to establish it. किसी भी चीज को तुम पोर्नोग्राफी नहीं कह सकते हो. Fine. तो there is a thin line and it has to be reasonable. It should not become an excuse for somebody to curb the freedom of artists etc. for fulfillment of some political objectives. तो ये भी एक इसमें issue of artistic freedom is an issue in India. Fine. तो फिलहाल let us see कि how decency morality is being determined in India. Fine. अब लिखो राइट. अब लिखो what are the parameters adopted by judiciary. To determine the decency. Actually not Hitchner, it is Hicklin test. लिखो right. First test is Hicklin, Hicklin, Hicklin test. Hicklin, Hicklin, Hicklin test. अब इसमें ब्रैकेट में लिखो taken from Britain. It is taken from Britain. Anyway, it is not followed in Britain, but it is followed in India at present. ठीक है, it is followed. ठीक है, taken in Britain. अब लिखो right. There are 3 parameters. Sorry, there are 2 parameters. Right, the material or an expression. Material or expression will be treated as
obscene if point number 1, it can deprave or corrupt. It can deprave, D-E-P-R-A-V, deprave or corrupt some persons. किसी को करप्ट कर दिया तो गड़बड़, ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट लिखो, ये सबसे अच्छा है. Who are such persons, right? Right? Ability to corrupt such persons, या impact to corrupt such persons whose minds are open to such immoral influences. And those who are likely to commit the crime. Those who are likely to commit the crime. Whose mind को वो करो underline, right? Whose minds are open for such immoral influences. ठीक है? Mind are open. अब लिखो right. What is the criticism of above test? What is the criticism of above test? Right. Right. The court will decide on the basis of the impact on those persons which are weak and vulnerable mind. And can easily be corrupted. अब नेक्स्ट टेस्ट लिखो, सेकेंड टेस्ट. सेकेंड टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन अप्रोच. अमेरिकन अप्रोच सेकेंड टेस्ट. ये तो फर्स्ट टेस्ट था, तो लोगों ने कहा ये कौन सा तरीका है, ठीक है, कि वल्नरेबल पहले माइंड देखो, ये वल्नरेबल है, ये इंसान का वैल्यू सिस्टम नहीं है, ये जल्दी से हिल जाएगा, करप्ट हो जाएगा. तो कोई और इंसान का अगर दिमाग कम है और उसके पास वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो क्या हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दोगे? ठीक है, अभी तो समझ में आया लोगों ने कहा ये क्या कौन सी चीज है. ठीक है कि ये भाई साहब का दिमाग खराब है, इनके चक्कर में विल यू पुट माई फ्रीडम ऑफ स्पीच. उल्टा उनको जेल में बंद करो या उनको पागलखाने में बंद करो, हमें क्यों बंद कर रहे हो? तो बेसिकली दे फेल टू अंडरस्टैंड अरेस्ट किसको करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो अमेरिकन टेस्ट. अमेरिकन टेस्ट है मिलर टेस्ट, MILLER, मिलर टेस्ट. मिलर टेस्ट में लिखो राइट, कोर्ट विल डिसाइड the issue of decency, morality, on the basis of advice of experts. Right? It means those who are considered as strong-minded and possessing
average reasonability. Possessing average reasonability. ठीक है, right? There are three parameters. There are three parameters prescribed. Three parameters prescribed in Miller's test. पहला, court will see the impact of the act on person with average acceptable reason. Average acceptable reason. Next, in case the representation is, in case where the representation is patently offensive. Patently offensive. Third, where the work as a whole, lacks any artistic value. Write in bracket, matlab, right, whether the work represent some artistic expression or pornography. Objective क्या है? Artistic representation और pornography और indecent. तो intention भी देखा जाएगा, work का कोई artistic value है, क्या चीज़ है, ऐसे in an arbitrary manner नहीं होगा. तो जैसे M.F. हुसैन का work, is it not having any artistic value? ठीक है, or will you degrade it to that level? So any person can decide that it does have an artistic value, or is it patently offensive? Is it what patently offensive? हाँ? Patently मतलब basic objective जो है वो किसी को hurt करने के लिए किया गया हो. ठीक है, तो what he has made the paintings of the nude Indian goddesses. Fine, but that is a part of Indian Hindu culture also. It's not that it is not present in Indian culture. Fine. So these are some, and एक extra emotional वाले पर क्या असर पड़ता है उसकी जगह नहीं, normal emotional वाले पे असर देखा जाएगा. ठीक है. अब एक इसमें एक ऐसे क्वेश्चन जस्ट लिखो, राइट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम इन इंडिया? व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम इन इंडिया? और इसी में लिखो, राइट, वाई देयर शुड बी ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस ऑन, वाई देयर शुड बी ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोशन पिक्चर्स, motion pictures in comparison to the expressions in print media. Fine. So once there was a question in mains also, ठीक है, that on what ground judiciary has justified the censor, judiciary has justified the certification of the movies and all, why there should be a, and what is the
overall procedure या institution क्या है with respect to the certification of the movies or the issue of the censorship of the movies. अब ये सारा जो issue keeps on reviving. So either there is a number of time censorship board, right? Yes, sir. Actually, it is not a censorship board. It is a film certification board. So it curbs. It has been accused that it has curbed the artistic freedom, or there have been situations like in case of Padmavat where Center Board for Certification has given the certificates, but yet there has been a public outrage, vandalism, and state governments not taking enough action to ensure that those who are disturbing the law and order, they should be punished. And it, after all, what is the purpose of police? Purpose of police is to prevent or to punish those who break, or to ensure that the law and order is maintained. Fine. Can you justify the police action where you prevent the screening of a movie which has got permission from the certification board? Certification board के बाद भी एक tribunal है. Tribunal में you can approach, you can resolve this difference. उसके बाद judiciary का अपना है, तो even the order of judiciary, even the order of high court, तो this cannot be an excuse. State क्यों exist कर रही है? State is existing for the protection of my freedom. I have a freedom. Somebody else violating my freedom. State should punish that. State का objective ये नहीं है कि stop me from expressing my freedom for the fear that there will be a violation of law and order. ठीक है, तो basic objective of creation of state is what? Law and order तो बोलते हैं, main function law and order है, लेकिन law and order किस context में? If I am exercising my freedom and somebody threatens me, then maintain law and order that that person should not threaten. It cannot be interpreted in the manner that because of my action law and order can get impacted, so I should not. इसका मतलब क्या है? Failure of the administration. ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर का और ओरिजिन और इसका कंसेप्ट भी समझना चाहिए. फाइन. तो व्हेन सपोज द पद्मावत इशू, अगर तुम लोगों से पूछा जाता व्हाट इज योर, शुड वी बी स्क्रीनिंग सच मूवीज, शुड देयर बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिस्टिक फ्रीडम? नो रेस्ट्रिक्शन, बट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन between obscenity and the artistic freedom. Actually, what should be your answer? No freedom can be absolute. ठीक है? Because you exercise freedom in a society. It cannot be over and above the morality of the society, because somewhere you have to achieve the balance. So, and you create an institution. Main thing is there is also a huge dissatisfaction with the way Center Board for Certification of Movies function. So you need to first of all bring transparency in the institutions. Fine. The second thing is you should not allow the police etc. to favor a particular section. Fine. So normally there is a huge scope of misuse when you use these terms public order, decency, morality, and obviously the judiciary has to come for its protection. So that is why judiciary intervened in Padmavat case, and it ensured, or it is because of the judicial intervention finally, that the movie could be displayed. Fine. So now the thing is, this is like state's responsibility, and exactly the opposite thing is happening. But obviously there is a thin line between artistic freedom and the pornography. तो intention of the filmmaker भी समझना पड़ेगा.
what exactly, but at the same time you can also say that as far as the historical movies are concerned, those who are making the movies, they should not try to manipulate the facts. Historical facts, these are all sensitive things, plus it is not right also. Fine? So don't just completely support any film, because you have to have a balance in your approach. Have you understood this? Artistic freedom issue. Fine? तो artistic freedom तो ठीक है, लेकिन in case कोई historical figure है तो proper research and manipulation of facts नहीं होना चाहिए. ठीक है? और next है, ये फिर जजेस के ऊपर है, हैव अ कैपेसिटी. और जो फर्स्ट स्टेप आता है जैसे सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो सर्टिफिकेशन बोर्ड में लोगों को फेथ होना चाहिए. और जब दैट बोर्ड हैज गिवन यू सर्टिफिकेट ए और यू, यूनिवर्सल व्यूइंग और एडल्ट व्यूइंग, और डेमोक्रेसी में सेंसरशिप नहीं होती. डेमोक्रेसी गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंसरशिप. The thing is, you have to ensure that those who do not supposed to watch, they should not be watching. तुमको लॉ एंड ऑर्डर बनाना है. ठीक है? तो सेंसरशिप, जैसे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देयर इज नो सेंसरशिप, देयर इज अ सर्टिफिकेशन. फाइन? तो सर्टिफिकेशन इज फाइन, बट इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. तो इंस्टीट्यूशन तो है कि अगर कोई फिल्म मेकर है, सेंसर बोर्ड इज सेइंग दैट यू रिमूव दिस, बट यू थिंक कि दिस इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द मूवी. तो बहुत सारे मूवीज जैसे वो फूलन देवी और इस पे हजार ये सारे इश्यूज, देन अगेंस्ट द सर्टिफिकेशन बोर्ड यू कैन अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल, यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट. अभी समझ में आया स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम. तो अब इसका इशू लिखो, राइट. हाँ तो गलत किया ना. हाँ तो एक्शन क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहेगा रिट ऑफ मैंडेमस. रिट ऑफ मैंडेमस करके वो इंश्योर किया जा सकता है कि वो मूवी को दिखाया जाए और जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको जेल में बंद करो, बजाय कि मूवी को बंद करो डब्बे में. ठीक ठीक है, पहले देख तो लो मूवी में है क्या. ठीक है, चलो. मतलब इश्यूज को क्रिएट करना, और इससे तो डेमोक्रेसी को बचाना है उल्टा. फाइन, लिखो, राइट. आर्टिस्टिक फ्रीडम. अब इसका लिखो कंटेक्स्ट ऑफ द डिबेट. Context of the debate. Right. In recent years, there has been many examples where state governments put ban on the screening of movies either on the ground of public order or on the ground of decency or morality. अब नेक्स्ट लिखो, राइट. आर्टिस्टिक फ्रीडम is an essential aspect of freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. अब इसमें लिखो व्यूज ऑफ पैब्लो पिकासो. व्यूज ऑफ पिकासो. और एम एफ हुसैन को इंडियन पिकासो बोला जाता था. ठीक है,
Pablo, Pablo, Pablo Picasso, Picasso, Pablo Picasso. लिखो राइट. Art is never chaste. CHASTE. Art is never chaste. मतलब कोई प्योरिटी वोरिटी वाला वो जो कंसेप्ट है वो आर्ट में नहीं आता. ठीक है. Art is never chaste, comma. Where it is chaste, it is not art. Art is imagination of an artist. Where it is not, where it is chaste, it is not an art. समझ आया? तो मान लो आर्टिस्टिक फ्रीडम पर कोई ऐसे लिखना है, यू कैन गो विद दैट. ठीक है. अब तो मूवी में करते, पेंटिंग में कौन सी प्रॉब्लम थी? अब पेंटिंग तो एग्जीबिशन देखने के लिए लोग टिकट भी लेते हैं ना. तुमको नहीं देखना है तुम टिकट मत लो, दूसरे को कैसे स्टॉप कर रहे हो? दैट आई टेल द केसेस ना. अब नेक्स्ट एक और लिखो राइट स्टेटमेंट. काफका, KAFKA, काफका का व्यू लिखो. KAFKA, काफका. राइट. विदाउट फ्रीडम, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट को. विदाउट फ्रीडम देयर इज नो आर्ट. कॉमा. आर्ट लिव्स only on the restraints or restrictions, comma, which it imposes on itself. Imposes on itself, comma, it dies with all other restraints. It dies with all other restraints. लिखो राइट the recent report of UNESCO, the recent report of UNESCO show the growing trend of curbing artistic freedom around the world. सभी जगह राइज ऑफ राइट है, फंडामेंटलिज्म है, लिबरलिज्म. सो ये सब लिबरल वर्ड के फीचर्स हैं. फाइन. अब नेक्स्ट लिखो राइट. आर्टिकल 19 ऑफ International Convention on Civil and Political Rights. Civil and Political Rights, UN का जो है International Bill of Rights, और अपना फंडामेंटल राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है. Article 19 International Convention on Civil and Political Rights recognize artistic freedom as a part of freedom of speech and expression. Article मतलब artistic freedom as a part of freedom of speech and expression. Next लिखो Article 15 of International Convention on Economic, Social and Cultural Rights. Economic, social and cultural rights mention
rights of artists to earn their livelihood through making, yeah, learn their livelihood, comma, by making the use of their artistic freedom. Right to livelihood of the artist भी है ये, through the use of their artistic freedom. अब राइट टू लाइवलीहुड है तो राइट टू लाइफ भी है, किसी के कमाने का ही सोर्स ये सब चीज हो. फाइन. अब नेक्स्ट लिखो सिचुएशन इन इंडिया. सिचुएशन इन इंडिया. ठीक है, राइट. देयर इज अ कांस्टेंट अटैक ऑन artistic freedom, but there are a lot of controversies related to motion pictures. Motion pictures. ठीक है. अब लिखो व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मैकेनिज्म. व्हाट इज द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विथ मोशन पिक्चर्स. तो here write Ministry of Information and Broadcasting. Has come up, has brought Cinematograph Act. Cinematograph Act 1952. Cinematograph Act 1952. ठीक है. अब इसमें लिखो सेक्शन 5 कैपिटल बी. सेक्शन 5 कैपिटल बी सब सेक्शन 1. सब सेक्शन 1. ठीक है. अब इसमें दिखा मतलब there can be some movies which can create threat to freedom of speech, which can create threat to social security, public order. मतलब मूवी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. तो जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, फॉरेन रिलेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट, वो सारी चीज़ें मूवीज़ पर भी लग सकती हैं. ठीक है. तो मूवीज़ को क्या लेना होता है, सर्टिफिकेशन. ठीक है. और अगर दिस सेंटर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन डिनाइज द सर्टिफिकेशन, they can deny on all any of these grounds, then you are not allowed to go for screening of your movie. तो यही है वो आर्टिकल, सेक्शन 5B of Cinematograph Act. Fine. Look, right. Right. It prohibits the public exhibition. It prohibits the public exhibition of the motion pictures if the competent authority decides
that the movie is likely to incite a person to commit offenses which come under reasonable restrictions under Article 19 Clause 2. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, राइट. अकॉर्डिंग टू द एक्ट CBFC, Central Board of Film Certification is a authority. Central Board of Film Certification is an authority which works under Ministry of Information and Broadcasting. अब नेक्स्ट सेक्शन 5B सबसेक्शन 2. सेक्शन 5B सबसेक्शन 2, इसमें दिस अलाउज गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द रूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेशन रूल्स, विच विल बी कंसीडर्ड बाय दिस बॉडी वाइल गिविंग सर्टिफिकेट. तो इस रिलेटेड जो सबसे फेमस केस है ख्वाजा अहमद अब्बास केस. इन ख्वाजा अहमद अब्बास केस these provisions of cinematograph act were challenged. तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि मोशन पिक्चर का इम्पैक्ट प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है. ठीक है, बहुत इंस्टेंट है. फिर प्रिंट मीडिया इज यूज्ड ओनली बाय दोज हु आर एजुकेटेड. ठीक है, बट मोशन पिक्चर इट इज, मतलब देयर इज नो नीड दैट यू हैव टू बी एजुकेटेड. तो यही वाला वो क्वेश्चन आया था. फाइन, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो सेक्शन 5B क्लॉज 2 लिखो अब, राइट. यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस to the competent authority comma determining the set of principles which they will consider while granting the certification. Granting the certification. अब लिखो, राइट. This is the most important case. ख्वाजा अहमद अब्बास केस, KA ख्वाजा अहमद अब्बास केस 1971. Right. These sections were found to be curbing the artistic freedom. तो गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है, क्या रूल्स हैं, फिर ये सर्टिफिकेट देंगे. गवर्नमेंट किस बेसिस पे बताएगी? मान लो गवर्नमेंट किसकी हो गई, ठीक है, कोई आ गए अपने पुराने जमाने वाले योगी वोगी टाइप, तो हो गया मूवी. ठीक है, बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बाहर भी चल रहा है, लोग कुछ समझ के कौन जाके सर्टिफिकेट देगा? दिस इज ऑल इंक्रीजिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट. और स्टेट क्या करेगा? रूल्स बनाएगा,
CBFC वाले क्या करेंगे, डायरेक्टर से पैसे लेंगे, प्रोड्यूसर से पैसे लेंगे। तो जब भी तुम रूल्स रेस्ट्रिक्शंस बनाते हो उसका मेन इंटेंशन यही होता है, ठीक है, करप्शन, राइट। तो अब लिखो, राइट, अब्बास केस, दिस वाज चैलेंज्ड, ठीक है। तो ये वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी, नॉर्मली अपहेल्ड ही करते हैं, ठीक है, कभी कभी हटाते, नॉर्मली अपहेल्ड ही करते हैं, अपहेल्ड द वैलिडिटी, ठीक है, राइट। अब लिखो, राइट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मोशन पिक्चर्स have to be treated separately from print media and other forms of artistic representation, because point number 1, instant appeal on the emotions. ठीक है. Point number 2, the new technologies right utilized create the effect of real life, create the effect of real life. Next, motion pictures have ability to stir, STIRR, stir up the emotions quickly and more deeply. Quickly and more deeply. Next, children and adolescents. Children and adolescents, right, can be more vulnerable to imitate the actions. Imitate the actions. ठीक है. अब इसी में लिखो, राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट, since movies are also accessible to the uneducated section, comma, a different approach is needed, considering the stage of Indian society. Up. Next you can write next paragraph, government had set up Sham Benegal Committee, write in bracket the year 2016, to suggest holistic approach for film certification. Holistic approach for film certification.
इसमें लिखो राइट, कमेटी should take into consideration right inverted commas global best practices and should create global best practices, बाकी countries में क्या होता है, and should create sufficient space for artistic freedom. Right. Committee was also to give recommendations on the internal functioning, staffing, 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 internal functioning, staffing of CBFC. इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को कैसे हैंडल करें, स्टाफिंग ऑफ CBFC. ठीक है, तो अब just write what is the approach of committee, what is the approach of committee, what is the approach of committee towards artistic freedom. So write no unnecessary restrictions, no unnecessary restrictions, yet there is a need to protect children and adolescents from potentially harmful effects, from potentially harmful effects. ठीक है. Second, parents should be well informed about the content. Parents should be well informed about the content. Next, certification process should be dynamic. Dynamic means as society changes, keep pace with the society. अब internal administration उतना important नहीं है अपने लिए, but सिर्फ इतना लिख सकते हो, right? It suggested that the CBFC should comprise of a chairperson and 9 other members right. There should not be too much interference by the government in the day-to-day affairs. Day-to-day affairs. अब लिखो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, बस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है. Institutional mechanism, first is CBFC. Second, in case, right, CBFC's decision is not acceptable, person can approach to the tribunal.
to the tribunal. Write in bracket film certification tribunal. Film certification tribunal. Fine. अब next लिखो right. If not satisfied with the tribunal, it can approach to High Court or Supreme Court. High Court or Supreme Court. अब एक केस लिखो, शंकर अप्पा केस. दो केस, एक शंकर अप्पा और एक पद्मावत, बस करना. शंकर अप्पा केस 2001. शंकर अप्पा केस 2001. तो Shankarappa case suggests two things. First thing is, in case certificate board has given the permission, then government should not come and curb the right. Or second, in general है that government should not interfere, there should not be any executive interference in the functioning of the tribunals, whichever tribunal. Fine. तो एक तो फिल्म से रिलेटेड वो केस है, दूसरा अपने यहाँ एक अलग ही टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स. तो ट्रिब्यूनल्स के पावर से रिलेटेड भी कीप इट इन माइंड. टू थिंग्स. फाइन. तो पॉइंट नंबर 1, once the film gets certificate from the expert body, governments cannot interfere to ask the body to change its opinion in the interest of law and order. क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो सकता है, तो रिवाइज करो कि 2-4 सीन ऐसे काट वाट के नाम वाम बदल के डाल दो, तो हर जगह पैसा खाने का इंतजाम है. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट लिखो. राइट. द केस इज इंपॉर्टेंट बियॉन्ड सर्टिफिकेशन. Case is important beyond certification, in the sense Supreme Court held that there should not be any executive interference in the working of quasi-judicial bodies. Quasi-judicial bodies. एक और केस लिखो नेक्स्ट. एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम केस. P for parrot. P जगजीवन राम केस. जगजीवन राम केस. ईयर 1989. और इसमें क्वेश्चन क्या था, फिल्म में गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ने फिल्म ही बैन कर दी. ठीक है. ठीक है. तो अब इसमें अब गवर्नमेंट लॉ, इसमें बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का रीजन देके गवर्नमेंट कैन नॉट बैन द फिल्मिंग. ठीक है.
जैसे पद्मावत में लॉ एंड ऑर्डर वाला जो काम किया जा रहा था, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, अब लिखो राइट. राइट, डिस्पाइट acknowledgement of the impact of motion pictures yet exhibition cannot be stopped in the name of public order. Right, it is duty of the government to maintain the public order. मान लो तुम कलेक्टर हो and in your own district there is a protest like this, and if a screening is done, there is a possibility of huge law and order. What will you do? You will control the law and order. तुम्हारा काम है law and order को बनाना. कैसे? 50 लोग protest कर रहे हैं, ठीक है, against the screening of the movie which has a certification done, and you have a certificate to screen the movie. What will you do? And the environment is very sensitive, it is election time. क्या करोगे? हाँ, देखने दोगे? हाँ, मूवी रोक दोगे? तो ये तो तुम्हारी ड्यूटी, मतलब एज यू आर गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ना. क्या करोगे? सेक्शन 144 पहले लगा दोगे. सेक्शन 144 भी एक बहुत बड़ा इशू है फंडामेंटल राइट्स के लिए. बट तुम्हारे हिसाब से स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, 85 लोग तो हैं. 10,000 लोग हैं वहां पे, 10,000 लोग हैं और 50 लोग कह रहे हैं हमें मूवी देखनी है. फिर क्या करोगे? दिखाओगे? और उसके बाद तोड़ फोड़ हुई पिक्चर हॉल की और ये सारी चीजें, लोगों की अगर मतलब लोग हर्ट हो गए, फिर क्या करोगे? हैं? और तुम्हें लग रहा है मीटिंग के बाद रेजोल्यूशन होगा? मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद का सिचुएशन है कि कोई एग्री नहीं कर रहा है. सिनेमा वाले को रिक्वेस्ट करोगे ना, तो जिसकी गलती नहीं है उसके राइट को रोकोगे ना. हाँ, तुम क्या करते? what you would have done in this situation? दूसरे दिन ही वो वहीं पे बैठे हुए. यूज ऑफ फोर्स ऑन टीयर गैस एंड ऑल ऑन द प्रोटेस्टर्स. ये कुछ और करते, तुम क्या करते? फोर्सेस के साथ तो जाते हो, तुम गए हो, फोर्स अब पहने हो, ठीक है, तुम्हारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट सब है. अब इशू ये है कि फिल्मिंग विल बी डन और नॉट. Filming, it should be done. You will not go for cost and benefit analysis. Protection important है कि order? Protection of rights important है? नहीं. ऑफिसर के लिए पहले ऑर्डर फिर लॉ. जुडिशरी का क्या है? कुछ भी बोलती रहे. You understand this? असली में अगर इतना बड़ा मॉब है और 50 लोगों को बचाओगे, बचा पाओगे, और फिर अगर इफ यू आर यूजिंग तो फिर और वायलेंस, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. हैव यू अंडरस्टूड दिस? जुडिशरी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि
ये लोग तो अपने जजमेंट बदल भी देते हैं ना। ठीक है, ठीक। हमेशा जब भी कोई पूछे राइट्स, लॉ, ऑर्डर, तुम किसको प्राइमेसी दोगे? ऑर्डर फर्स्ट, लॉ सेकेंड, राइट थर्ड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यू आर नॉट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, if somebody says judiciary does this that, but you have to see the ground situation. It is easy for the judges sitting in the high court and giving judgments. ठीक है, because practically judiciary का judgment जान पे खेल के पिक्चर दिखवाओगे किसी की? ठीक, जुडिशरी वाले, मान लो जुडिशरी ने जजमेंट दे दिया, फिर डायरेक्टर ने उसको पैसा खिला दिया जज को, फिर ठीक है, तो तुम सीधे बोल दो ऑर्डर फर्स्ट, लॉ सेकेंड। तुम्हारा काम ही ऑर्डर है। स्टेट का काम फ्रीडम, प्रोटेक्शन है नहीं, और प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और हमेशा प्रैक्टिकल रहना है। ठीक है, देखो एनीवे ये सब प्रोफेसर्स के लिए, इसलिए मेंस का आंसर अलग होता है, वो प्रोफेसर चेक करते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर्स के लिए ये सब लिख दो, लेकिन वहां पे क्लियर रहना है। ठीक है, एक तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले लोग वैसे भी नहीं चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, आप लिखो पद्मावत केस। कौन सी क्लास? पॉल साइंस क्लास ना? हाँ, तो चलो ना, अभी लास्ट लिखो पद्मावत क्लास, तो पद्मावत केस, पद्मावत केस लिखो। लिखो राइट, स्टेट्स कैन नॉट थ्रो, स्टेट्स, और लिखो गवर्नमेंट कैन नॉट थ्रो CBFC certificate in dustbin. अपनी जुडिशरी कम नहीं है। ठीक है, अब अगर थ्रो किया तो निकालो वहां से। ठीक है, राइट। इफ लॉ एंड ऑर्डर इज एन इशू, there is a scope to use Article 356. ठीक है, okay. ठीक है, because when you do not protect the freedom of speech and expression, it is a breakdown of the constitutional order. ठीक है, देखो ब्रैकेट में देखो, राइट, इफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फिर देखो यूज ऑफ थ्रेट, यूज ऑफ थ्रेट or any other form of intimidation, any other form of intimidation, right, cannot give reason for curbing the freedom of speech. सीधे जाके गवर्नर से बात करो, गवर्नर से 356 लगवाओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाओ। ठीक है, लेकिन पिक्चर दिखानी है। ठीक है, इतना जब जुडिशरी ने किया तब जा करके वो मूवी दिखाई जा पाई। ठीक है, अब तुम लोग सब बता रहे हो मैम क्लास व्लास कब, तुम लोग की बहुत बातें सुन रहे हैं कि क्लास कैसे खत्म होगा, पॉलिटी क्लास कैसे खत्म होगा,
बहुत सारे कंप्लेन सुन रहे हैं, तो जैसे ही वो शाम वाला क्लास ख़त्म होगा उसके बाद 9 बजे तक तुम लोगों को बैठाएंगे। वैसे तो ऐसे भी ख़त्म हो जाता है आफ्टर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन तुम लोग को जल्दी ख़त्म करना है। 9 बजे तक का टिफिन विफिन लेके आना। द मूवमेंट शाम वाला ना, आई विल फिनिश मैक्सिमम बाय 15। हाँ, जितना पढ़ा दिया गया उतना पढ़ रहे हो, खत्म। अब बस सोच लो तुम लोग का क्या हाल होने वाला है।